Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the another video of our series cybersecurity projects. So in this video, I am going to explain you about our new project named Automated Recon tool. This tool is basically designed for information gathering. Okay, so as you all know कि आप लोगों को पता है जो हमारा साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग. So this tool is basically uh, developed according to information gathering. Okay, so in this tool basically we have used Python and FastAPI for backend, and for front end we have used npm, html, css and javascript, and that's all. So we have used uvcon server for the for the hosting this website on locally. Okay, so let's begin. So our first step uh, is to change the directory to backend. So cd backend. So as you guys are saying कि मैं backend की directory में आ चुका हूँ. So now we just need to like build a, or you can say create a virtual environment. Okay, so python hyphen m v-e-n-v-m, press enter. It will take some time. एज यू गाइस आर वाचिंग कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट तो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है बनकर. और यू कैन से जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट तो पहले से ही बना हुआ था. देन यू जस्ट व्हेन स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट. So you after that you just need to activate the virtual environment, and then the next step is you just need to install the requirements. Okay, pip install hyphen r requirements dot txt, press enter. So my requirements are already fulfilled, so that's why it doesn't take any time, not even much time. It doesn't take even any time. So next you have to just install this step is optional. Like if you want to install you can install the chromium, but अगर आप लोग screenshots reinstall like for screenshots chromium से तो आप screenshots मतलब क्लिक करेगा उसके बाद. So okay, then next step is you just need to run the backend on uvcon server. Just copy paste this. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा बैकएंड का सर्वर था वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है, उस एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है. एंड देन यू जस्ट नीड टू come to backend front end folder cd front end, and then npm install here you can see npm install जो हमारा नोड के सक्सेसफुली जो भी मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल हो चुके हैं. एंड देन sorry, then npm run dev, press enter. After that you just need to open this link. Just click control plus click on this link or copy this link and paste it to any browser. Here you can see this is the dashboard of the project guys. Like here आप जितने भी आपने टारगेट टास्क स्कैन किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे. सब डोमेन्स कितने हैं उनके मतलब एवरीथिंग यू कैन सी हियर. ओके, एंड जो भी रिसेंट स्कैन्स होंगे आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे. एंड देन वी जस्ट नीड टू पुट टारगेट हेयर. तो यहाँ पर हम क्या टारगेट करेंगे, हम कोई भी एक पर्टिकुलर टारगेट डालेंगे. सो स्कैन डॉट
ready to target, and then just scan. Okay, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्कैनिंग आ रहा है, so it will take some time. सो द स्कैन इज कंप्लीट गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा स्कैन था वो कंप्लीट हो चुका है. आप लोग डैशबोर्ड पे जाके देखोगे तो वन टारगेट, वन सब डोमेन, वन लाइव होस्ट एंड वन वल्नरेबिलिटी एंड 60 यूआरएल टोटल कितने इसने फाइंड करे हैं इसके थ्रू. ओके, तो जो हमारा ये बेसिकली स्कैन में डॉट एन मैप डॉट ओ आर जी बेसिकली स्पेशली फॉर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है. हमारा टूल है, आपकी एनमैप जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये आपकी वेबसाइट है प्रोवाइड करवाई जाती है. एंड वन मोर थिंग, डू नॉट यूज दिस टूल फॉर एनी अनऑथराइज्ड पर्पसेस. ओके, और एनी अनऑथराइज्ड स्कैनिंग्स. सो ये यू कैन सी यहाँ पर आपको एक वल्नरेबिलिटी बता रहा है कि इसमें एक वल्नरेबिलिटी मिली है, क्योंकि ये सिर्फ स्कैनिंग के लिए बनी है वेबसाइट, इसमें कोई ज़्यादा आपको वल्नरेबिलिटीज देखने को नहीं मिलेंगी. तो इसमें सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी बता रहा है कि मिसिंग एक्सट्रीम हेडर्स और मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स, बेसिकली जितने भी आपके हेडर्स थे वो नहीं है इसमें. ओके, एंड आप लोग देख सकते हो ये लो टाइप की वल्नरेबिलिटी है, एंड यहाँ पर आप ऑल टाइप्स की वल्नरेबिलिटी देख सकते हो, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो एंड इंफॉर्मेशनल. And then here are some external tools, और आप go के थ्रू कुछ external tools भी इसमें ऐड कर सकते हो, but you need to install go first. go एक लैंग्वेज है हमारी, आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर. ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.